Sir, I apologize for the delay. I got held up. सर, कल सदन में संस्कृत को बढ़ावा देने की चर्चा हो रही थी, मगर आज तक इस सदन में हमने ये चर्चा नहीं की कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनके पेंशन के बारे में और उनके जो ग्रेच्युटीज़ वगैरह हैं उसके बारे में कभी हमने चर्चा नहीं की। हम कहते हैं कि भारत सदियों से गुरु को मार्गदर्शक मानता रहा है और हम विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब तक गुरु दक्षिणा तो छोड़िए, उनकी कमाई का हिस्सा नहीं मिलेगा तो ये कैसे संभव होगा। सर, पिछले मैं एक ही एग्ज़ाम्पल दूंगी। जो पिछले साल 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीचर्स जो रिटायर हुई हैं, उनकी पेंशन वाज जस्ट गिवन टू देम ऑन द 15th and 16th of February आफ्टर 1 year। हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों के साथ ये सब तब हो रहा है जब वे अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में 19.54% of केंद्रीय विद्यालय students passed their board exams and set a record of highest passing percentage in CBSE class 12 results of 2019. KV schools recorded all-time high success ratio of 98.5%. Obviously, teachers associated with KVS have a big role behind these good results. Sir, KVS, the primary teacher gets a salary of 50,000 rupees. Trained graduate teacher starts with 58,000 rupees approximately, and postgraduate teachers 65,000 rupees. When these teachers retire, if their last drawn salary, which is 90,000 rupees, then their pension comes to 28,000 after commutation. Looking at these approximate figures, I have discovered that they have not been given leave encashment, gratuity and commutation money, which comes to almost 25 to 30 lakhs. And this is supposed to be given to them within 3 months of retirement, or else they will have to be given the amount with interest at GPF rate. I'm talking about the teachers who have retired in 2019 after having served almost 30 years of their lives. This money, if deposited in the bank, earns them interest, which eventually helps them live a decent life, but unfortunately, this hasn't happened. Conclude now. Okay, sir. Sir, I would like to request the government through you, sir, before starting new schemes, to give the due respect to these teachers and enable them to live. Thank you, Jayaji. Dr. Sasmit Pal, now we are going